Good morning to my dear students. Welcome back to Atma Grade School, Jai Swami Narayan. Today, 7th standard. We were supposed to complete history book lesson 7, page number 94. That is, the Maharashtra, Highlands and Karnataka were home to Kolis, Berards and numerous others. Kolis also lived in many areas of Gujarat. Further south, there were large tribal populations of Koragas, Vetars, Maravars and many others. The large tribe of Bhils was spread across western and central India. By the late 16th century, many of them had been settled agriculturists and some even zamindars. Many Bhil clans nevertheless remained hunted. ये सब जो Bhils है ये these are all the Adivasis caste. Okay, many Bhil clans जो Bhils के group हुआ करते थे, टुकड़ी कहते थे उनको. Nevertheless remain hunter gatherers. They were all hunter gatherers. वो सिर्फ hunting ही जानते थे. You know, आदिवासीज में मैंने आपको बताया बहुत सारे कास्ट के लोग हैं एंड कुछ हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, कुछ हैं जो हंटिंग करते हैं, तो इनको और कोई जॉब आती नहीं है कुछ करना. The Gonds were found in great numbers across the present day states of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh. Then nomadic pastoralist. Okay. That is nomadic pastoralist moved over long distances with their animals. They lived on milk and other pastoral products. They also exchanged wool, ghee with settled agriculturists for grain, cloth, utensils and other products. See the figures, you can see figure 2 and 3. Then page 95. They bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals. The Banjaras were the most important trader nomads. Banjaras जो थे वो कारवान पीपल होते हैं. बंजारास वो कहीं पे भी एक जगह परमानेंट सेटल नहीं होते हैं. दैट इज 3 महीने यहाँ फिर कहीं और. द कारवा वॉज ऑल्सो कॉल्ड टांडा. Sultan Alauddin Khalji used the Banjaras to transport grain to the city markets. Emperor Jahangir wrote in his memoirs that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in towns. They transported food grain for Mughal army during military campaigns. With a large army, there could be 100,000 bullocks carrying grain. You can see Banjaras में बंजारास भी तभी की दैट इज एक उस टाइम में बंजारा पीपल बंजारों का डांस वगैरह, फिर बंजारा कहीं पे रह के अपने उनका अपने ही उधर थोड़ा डांस वगैरह का रहता था, तो लोग वो देखने जाते थे, कहते थे बंजारा की टोली आई है, चलो देखने बंजारास का नाच गाना देखेंगे. सो nomads are wandering people. Many of them are pastoralists who roam from one pasture to another with their flocks and herds. Similarly, groups such as craftspersons, peddlers and entertainers travel from place to place practicing their different occupations. Both nomads and the groups often visited the same places every year. Then as you can see this figure, bronze crocodile.
कुतिया कौंड ट्राइब, ओडिशा. Bronze crocodile. Many pastoral tribes reared and sold animals. Pastoral tribes यानी जो सिर्फ एनिमल्स की ही करते थे, एनिमल्स को बेचना, कि उनकी हंटिंग करना, उन्हें बेचना, उनका फ्लैश बेचना, यही काम करते थे. Such as cattle and horses to the prosperous people. Different caste of petty peddlers also travelled फ्रॉम विलेज टू विलेज. पैडलर यानी पैदल चलकर जाते थे एक गांव से दूसरे गांव तक. दे मेड एंड सोल्ड वेयर्स सच एज रोप्स बेचने जाते थे, रीड्स, स्ट्रॉ मैटिंग मैट एंड कोर्स सैक वो बोरी आती ना वो. समटाइम्स मेंडिकेंट्स एक्टेड एज वॉन्डरिंग मर्चेंट्स. There were caste of entertainers who performed in different towns and villages for their livelihood. Then changing society, new caste and hierarchies. As the economy and the needs of society grew, people with new skills were required. Okay, जो पुराना वक्त था तभी लोगों को कुछ भी नहीं पता था. जो ट्राइबल पीपल थे वो जैसे थे, वो मतलब उनकी तरफ कोई देखता नहीं था. उनकी अपनी कम्युनिटी थी, अपने कस्टम, ट्रेडिशन, फेस्टिवल्स अपना ही था. नो वन वॉज बॉर्डर्ड विद देम. जैसे जैसे एरा बीतता गया इनमें थोड़े से चेंजेस आए. लोगों ने थोड़ा सा इनमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, मतलब इनको काम देना शुरू किया. बिकॉज हार्ड वर्किंग पीपल थे. ये लेबर वर्क, यही लोग लेबर वर्क करते थे. यही लोग मैक्सिमम लेबर वर्क you get from here. Small caste or jatis emerged within varnas. For example, new caste appeared among us, the brahmanas. On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste based society और उन्हें स्टेटस दिया जाता था. नाम जातीस स्पेशलाइज्ड आर्टिजन्स, ये जो थे ना उस टाइम के ब्लैक स्मिथ, आयरन स्मिथ, कारपेंटर्स, ये सब यही कास्ट के थे. ऑल मतलब इनकी जो जनरेशन है इतने सालों से एंसेस्टर्स वो वही करते आ रहे हैं. सेम जातीज रादर देन वर्ना बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी. देन deliberations on jati, a 12th century inscription from Uyakkondan Udayur in Tiruchirappalli Taluka describes the deliberations in a sabha of brahmanas. They deliberated on the statues of a group known as Rathkaras, chariot makers. In south में तो you can see all temples and सब chariot ही है सब. Even मोधेरा सर टेम्पल का भी वही है ना, यूनिक chariot बना हुआ है. And erecting gateways for temples with images in them, preparing wooden equipment used to perform sacrifices, building mandapas, making jewels for the king. Among the Kshatriyas, new Rajput clans became powerful by the 11th and 12th centuries. They belong to different lineages such as अभी इनमें ये था हुनास, चंडेलास, चालुक्यास and others. Some of these too had been tribes earlier. ये भी एक समय में ट्राइबल कम्युनिटी थी, लेकिन एरा बीतने के बाद इनके पास पैसा आ गया एंड पावर आ गई, सो उनको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया. Many of these clans came to be regarded as Rajputs. They gradually replaced the older rulers, especially in agricultural areas. Here, a developed society was emerging and rulers used their wealth to create powerful states. The rise of Rajput clans to the position of rulers set an example for the tribal people to follow. Gradually, with the support of the Brahmanas, many tribes became the part of the caste system. यानी एक वक्त आया कि जैसे कि पहले टाइम में जो ये मतलब कुछ जो ये राजपूत क्लैन्स है, दे हैड उनका जो एंसेस्टर्स था वो पहले कहते हैं कि ट्राइबल से ही बिलोंग करता था. ओके, बट नाउ द लेंडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास. A large majority joined the lower jatis of caste system. On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh and the northwest frontier
had adopted Islam quite early. They continued, यानी कई जो हैं वो तो थोड़ा कन्वर्ट भी हो गए थे किसी और कास्ट में. They had changed their caste. The unequal social order prescribed by Orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas. The emergence of states is closely related to social change among tribal people. Okay, now see a closer look. You can see a gaunt woman. Then shifty cultivation. ये लोग shifting cultivation बहुत किया करते थे. Trees and bushes in a forest area are first cut and burnt. Then the crop is sown in the ashes. When this land loses its fertility, another plot of land is cleared and planted in the same way. Shifting cultivation. एक लैंड में जब वो उनकी ग्रो होके राइप होके मार्केट में बिक जाती थी तो उस एरिया को वो जला देते थे, पूरा राख कर देते थे, फिर कहीं और चले जाते थे और कहीं फर्टाइल लैंड, फिर वहाँ क्रॉप किया, फिर कितने सालों बाद फिर से ये लैंड पे आते थे. So the Gonds lived in a vast forested region called Gondwana, or country inhabited by Gonds. Gondwana. They practiced shifting cultivation. The large Gond tribe was further divided into many smaller clans. मतलब गोंड एक मेन थी, उसके अंदर फिर बहुत छोटी छोटी जातियां बनी. About the time that the power of the Delhi Sultans, और उस टाइम मतलब each clan has its own राजा और राय. ओके, और उस वक्त दिल्ली के सुल्तान्स का राज ख़त्म हो रहा था. A few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. The Akbarnama, a history of Akbar's reign. जब अकबर राज किया करते थे उन पे एक हिस्ट्री है, जैसे अकबरनामा mentions the Gond kingdom of Garha Katanga that had 70,000 villages उस time. The administrative system of these kingdoms was being centralized. Then the kingdom was divided into ghars. Each ghar was controlled by a particular Gond clan. This was further divided into units of 84 villages called Chaurasi. The Chaurasi was subdivided into barhots, which were made up of 12 villages each. The emergence of large states changed the nature of Gond society. Their basically equal society gradually got divided into unequal social classes. That is, Brahmanas received land grants from the Gond Rajas and became more influential. The Gond chiefs now wished to be recognized as Rajputs. So Amandas, the Gond Raja of Garha Katanga, assumed the title of Sangram Shah. His son Dalpat married Princess Durgavati, the daughter of Salbahan, the Chandel Rajput Raja of Mahoba. गोंड राजा, मतलब सोचो कि मतलब बिकॉज इसलिए ना क्योंकि राजपूत बहुत पहले एक्चुअली ये ट्राइबल ही थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त मिला ये राजा बनते गए, राजा या राय बन गए किसी न किसी किंगडम के. दलपत however died earlier. Rani Durgavati was very capable and started ruling on behalf of her 5-year-old son Bir Narain. Under her, the kingdom became even more extensive. In 1565, the Mughal forces under Asaf Khan attacked Garha Katanga.
A strong resistance was put up by Rani Durgavati. She was defeated and preferred to die rather than surrender. और उनका son भी too died fighting soon after. Then comes, Graha Katanga was a rich state. It earned much wealth by trapping and exporting wild elephants to other. उस टाइम एलिफेंट्स का एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचना, ट्रैप करना और एक्सपोर्ट करना बहुत होता था एंड काफ़ी एक्सपेंसिव था. When the Mughals defeated the Gonds, they captured a huge booty of precious coins and elephants. They annexed, उन्होंने छीन लिया part of the kingdom and granted the rest to Chandra Shah, an uncle of Bir Narain. Despite the fall of Garha Katanga, the Gond kingdom survived for some time. However, they became much weaker and later struggled unsuccessfully against the stronger Bundelas and Marathas. और यहीं पे ये जो घर कतंगा है, गॉन्ड्स का जो एक टाइम में बहुत बड़ा राज्य था, वो पूरा खत्म हो गया. Okay, then comes the Ahoms. The Ahoms migrated to the Brahmaputra Valley from present-day Myanmar in the 13th century. They created a new state by suppressing the older political system of the Bhuiyas. लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे. ड्यूरिंग द 16th century, they annexed the kingdoms of the Chutias and of the Koch Hajo and subjugated many other tribes को अपने कब्जे में कर लिया था. The Ahoms built a large state and for this they used firearms as early as the 1530s. By the 1660s, they could even make high quality gunpowder and cannons. However, the Ahoms faced many invasions from the southwest. In 1662, the Mughals under Mir Jumla, Ahoms faced many invasions. और फिर in 1662 में मुगल थे, जो मीर जुमला थे, अटैक द एहोम किंगडम. उनकी डिफेंस इतनी बहादुर थी कि एहोम्स हार गए. बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग. और जो उन्होंने सोचा था कि इस रीजन पे हम काफ़ी टाइम तक राज्य करेंगे, वो उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ. द एहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर. दोज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स. अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टेकन. Each village has to send a number of pecks by rotation. मतलब कि ये उनको, मतलब कि एहोम्स जो थे उनको ज़बरदस्ती कहा जाता था कि तुम लेबर वर्क करने आओ. ओके, a census of the population was taken. Each village has to send a number of packs. जैसे ये विलेज ने 4 भेजे तो वो भी 4 भेजेगा, दूसरा विलेज 4 भेजेगा, वो 4 भेजेगा, वो 4. फिर ये विलेज ने 5 भेजे लेबर काम करने को. मतलब उनको ज़बरदस्ती कहा जाता था. इससे कहते थे पैक्स. ये 5 भेजेगा, ये 5, ये 5, ऐसे रोटेशन होता था. रोटेशन. People from heavily populated areas were shifted to less populated areas. देखो, ये गारो, खासीज, जैंतियास, कचहरीज, ये सब ईस्ट में, मैक्सिमम ट्राइबल ईस्ट में, बांग्लादेश, ये सब में बहुत सारे आदिवासी पीपल हैं. Ahom clans were thus broken up. By the first half of the 17th century, the administration became quite centralized. Okay, तो we had studied that is पहले तो गॉन्ड्स के बारे में, किस तरीके से वो डिफीट हो गए थे.
देन अबाउट द एहोम्स, एहोम्स इन द ईस्ट है, और गोंड्स यानी जो गोंडवाना लैंड में रहा करते थे उनका एंसेस्ट्रल्स, दैट इज गोंड्स, दैट इज ट्राइब्स ऑफ द, ये सब ट्राइब्स ऑफ द ईस्टर्न इंडिया है. Okay, so up till now it's a huge lesson था ये. We have studied about tribes, nomads and settled communities. Still this lesson is left to be explained from page number 100. I will continue in my next class. Till then you just read this lesson twice, thrice, काफ़ी बार आप इस lesson को read करो. Okay, अच्छा एकदम लेसन है ऑल अबाउट ट्राइबल पीपल, क्योंकि ये एक्चुअली हमारी एंशंट हिस्ट्री है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है ये हमारी ट्राइबल पीपल. किस तरीके से ब्रिटिशर्स आने के बाद ट्राइबल कम्युनिटी पूरी तरह से बेघर हो गई, उनका सर्वाइवल एवरीथिंग स्टॉप हो गया सा. सो ये इम्पॉर्टेंट है, दैट इज ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज. जो सेटल्ड थे ब्रिटिशर्स उनको लाइक करते थे और उनसे काम करवाते थे, उनको वहाँ रहने देते थे. लेकिन जो ट्रैवल करते थे यहाँ वहाँ, फिर उन्हें वो गांव से बाहर ही निकाल देते थे. Okay, so I will continue my this in my next class from page number 100. Okay, thank you to all. Take care.